Okay, so today's topic is radicals and square roots of positive numbers, right? We have seen how to make squares, right? So we have seen the exponents. Now we are seeing the radicals and square roots, right? Whenever a number is with a square root, it is called a radical, right? This is a sign of radical, right? Is this clear? Yes, people. Any issues with this? सर जो रेडिकल का साइन है और स्क्वायर रूट का भी साइन होता है ना? बिल्कुल देखो पूरे के पूरे को हम उसका बेसिकली जो फिनोमेना है दैट इज स्क्वायर रूट, ठीक है, बट द साइन इज कॉल्ड रेडिकल, राइट? ओके सर. It's any issues? No, sir. अच्छा जी, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पर आपने अभी तक कहीं भी ये नहीं लिखा था कि एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सही है? या अगर लिखा था तो प्रॉपर्ली फिर उसको डिफाइन किया था नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को दोनों को, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्ट ही किस नाम से किया है? रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. इसका मतलब ये हुआ कि वी आर जस्ट गोना सॉल्व x नॉट अंडर रूट माइनस x, ठीक है? जी नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. Any issues? No, sir. Great. So here are some properties of square root. हम वन बाय वन आज की क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन विल मूव. ठीक है जनाब? Any perfect square root, number one, किसी भी रूट का स्क्वायर रूट का एक नंबर रूट होगा, राइट? व्हेनेवर वी रूट देम अप विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं वापस x को स्क्वायर करूं तो मुझे a मिल जाएगा. ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? Yes people, is it so or not? एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 36 इज इक्वल्स टू 6. अगर मैं 6 को वापस स्क्वायर करूं, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36. क्या ये बात सही है या नहीं? Yes, sir. सही है. मेरा सबको यहाँ तक किसी को कोई इशू? No, sir. No, sir. नंबर 2,
if I have two numbers with a radical and they are multiplying with each other, so what will happen? It will be equals to a, right? बात समझ आ रही है? नो सर, दोबारा से समझाएंगे. अच्छा, whenever we have two square roots multiplying with each other, the numbers are in roots, not square roots, right? किस तरह से एग्जाम्पल में देखते हैं, ज्यादा क्लियरली समझ आएगी बात. लेट्स से I have root 3 into root 3. The answer will be under root, answer will be 3. Sorry. बात समझ आ रही है नहीं? यस सर, समझ में आ रही है. अच्छा, इसको यस सर. नहीं आई, चले मुझे थोड़ी सी थी कि आई नहीं आएगी. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 3. यस यस सर. यस सर. चलो यहीं करते हैं. अगर 3 into 3 है तो यानी ये 3 का स्क्वायर है. यस सर. और आपने अपनी फिर ऊपर वाली प्रॉपर्टी में देखा है कि स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं या दे आर अपोजिट टू ईच अदर. यस सर. 3. बात समझ आई है? यस सर. तो ये है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी. क्लियर? एनी इश्यूज गाइस? जी, नो सर, नो इश्यूज. अब क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी? यस सर. थर्ड Yes, sir. प्रॉपर्टी इसी की एक्सप्लेनेशन है. क्या क्लियर नहीं है जैनब बेटा? जैनब को कुछ अच्छा जहर यस हो गया. ओके, दैट्स ग्रेट. ठीक है, सो थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली लाइक दिस वन. अंडर रूट x into अंडर रूट y is equals to अंडर रूट xy. समझ आ रही है बात? मैं ये डॉट नहीं लगाऊं तब भी की बात है. क्लियर है सबको यहां तक बात? यस सर. एक्स और वाई तो अलग अलग चीजें हैं. दो अलग अलग नंबर्स है. पहले हमने दो सेम नंबर्स देखे थे. अगर जो है वो प्रोडक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा? इसी तरह से होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अंडर रूट 3 into अंडर रूट 4. क्या हो जाएगा जनाब? अंडर रूट 3 into 4. ठीक है. अंडर रूट 15. दैट इज योर आंसर. एंड लेट्स से यहां पर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता. फॉर एग्जांपल लाइक 3 का स्क्वायर या 36. तो हम क्या करते? उसको रूट कर देते, तो आंसर लिख देते हम. ठीक है. Are all these three property clear to everyone? सर 15 कैसा आया? Oh sorry, 15 है, 12 है. My bad.
Yes. Is everyone done with this one? Should I remove it? Yes, sir. Okay, let's move towards the fourth Yes, one. sir. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, and on the fourth one, when it's a very easy one, as we have seen it before also, okay, when we have a square root a upon square root a, the answer will be 1, right? Yes, sir. This one is very easy. We have seen this one before in our previous properties, right? When we were discussing which properties of real numbers, right? For example, under root 3 upon under root 3 will give me what? Root 3 will, one under root 3 will cancel under root 3. 1, 1, give me 1, right? Easy. So fourth one, it's the fifth one. Now, let's say if I have, before this, we have seen a under root a. Now, if I say, sorry, under root a upon under root a. Now, if I say a upon under root a, so the answer will be under root a. How? Can anyone tell me? सर रेसिप्रोकल होगा शायद. बिल्कुल reciprocal होगा. There are two ways to do it right now. हम हमारा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसके थ्रू करते हैं. आगे हम इसको और एक और तरीके से सॉल्व करना करके देखेंगे, बट नॉट राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड देन एक्सप्लेन इट अप, राइट? अंडर ए is, let's say, 5 upon under root 5, right? What will happen? 5 has a power of 1 and under root is a power of 1 upon 2. Clear? So जब हमारे पास लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर होता है तो क्या करते हैं हम? 5 1 minus 1 upon 2, right? 0.5 आएगा फिर. 0.5 आ जाएगा. 0.5 का मतलब क्या है? हाफ. 5 1 upon 2. और हाफ पावर का मतलब क्या होता है? रूट. So the answer is under root 5. क्लियर है सबको? नो सर. किसको क्लियर नहीं हुआ भाई? सर मुझे हसन देखो, आपको ये बात समझ आई? ये स्टेप को स्टेप वाइज फिर से समझते हैं. फर्स्ट स्टेप समझ आया? यस सर. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया आपको कि जो रूट की पावर होती है वो क्या होती है? किसी भी नंबर पे हाफ होती है, राइट? I just change the root to its power, right? और हमें लॉ ऑफ कोशेंट के से पता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट में, कि अगर हमारे पास दो सेम नंबर्स पे
different powers होंगी and they are dividing up, so the powers will be subtracted like this. Yes, Hasan. Okay, sir. And Sir. when I did this, I got a half power on 5, right? And half hours mean power 5. Yes. सर आपकी आवाज बहुत लेग कर रही है. मैं कह रहा हूँ कि half power is what? Root 5, right? Yes, sir. So is this clear? कि Yes, हमारे sir. पास अगर सेम नंबर डिवाइड हो रहा हो रूट में तो आंसर क्या आएगा? रूट ऑफ दैट नंबर. देख लीजिए ऐसा ही है. So the answer is under root 5. क्लियर हुआ सबको? नहीं? Yes, people, is this clear to everyone? सर मैं थोड़ी देर से आई हूँ तो आप प्लीज दोबारा समझा सकते हैं. हालांकि हम जो प्रॉपर्टीज कर चुके हैं वो तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, बट those ones which we are doing right now, you can continue with those ones. अभी लास्ट हमने जो करी है वो भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है. आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू, राइट? नो सर. Not this one. I just नो explained. सर. If a number is dividing by its root or radical, so the answer will be radical of that number. How? We have just seen it. Okay, the power of the number is always 1, and when we have the root on the power, that means its power is half, right? Now, by the law of quotient of power, we know then when the numbers are dividing up and the bases are same, the powers subtracted. Got it? And after subtracting it, we got 5 to the power half. And the half power means square root. The answer is under root 5 or square root 5. Is it clear? Let's Yes, sir. move towards the sixth one. The sixth one is opposite of this one, under root a upon a, and the answer will be 1 upon under root a. Yes. So similarly, let's take the example which we have given before, 1 upon under root a. Under root 5 upon 5. Can you say it over here? 5 to the power 1 upon 2 upon 5 to the power 1. Yes. This will become 5 to the power 1 upon 2 minus 1. So the answer will be 5 to the power minus 1 upon 2. And when we have a minus power in it, that means it's going towards the denominator. That means it's reciprocal. 5 to the power 1 upon 2. And the answer will be half. 1 upon under root 5. The answer will be 1 upon under root 5. क्लियर हुई बात सबको? ये जी
सर सर -1/2 कैसे हुई? -1/2 ऐसे हुई कि हमारे पास हाफ -1 होता है, -1/2। आप करके देखिए। जी, है हाफ -1/2? Yes or no? Yes, sir. Okay, that's great. यस सर Perfect, perfect. Okay, similarly, on the other hand, we have a seventh property, which is, let's say, there are two different numbers now which are divided now. So this will they come under the whole root, right? This is how it is, right? Is this clear? For example, यस सर under root 6 upon under root 12. The answer will be the whole root 6 upon 12, right? And 6 1s are 6, 6 2s are 12. They can even simplify it in it, right? Under root 1 upon 2. Is this clear? Yes. किसी को कोई मसला है यहाँ तक? No. No. Great. So with this we have a last one, which is eighth property. Eighth one is very interesting. It's basically an addition one. So let's say a under root b and plus x under root b. The answer will be a plus x under root b. एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जरा सबको क्लियर हो बात. Let's say 3 under root 2 plus 6 under root 2. What will be the answer? The numbers before the roots will be added. 6, 3 plus 6, and under root 2 will be written like this, right? Nine under root 2. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, that's great. So anyone has any issue in these 8 properties? सर 8 वाली समझ में नहीं आई 8 वाली समझ में नहीं. अच्छा देखो, इसकी एग्जांपल एक और लेते हैं कि लेट्स से, मैं मतलब इसको समझाने के लिए एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं. 2x plus 4x, क्या आंसर होगा? 6x. 6x. 6x कैसे किया आपने ये? क्योंकि वेरिएबल सेम थे तो हमने नंबर को ऐड कर दिया. यानी लाइक टर्म्स थी तो नंबर्स कोफिशिएंट्स ऐड हो गए, राइट? सो ये देखें, अगर इसको मैं अपने रेडिकल को यहाँ पर एक्सपोनेंट लाइक टर्म्स देखूं तो क्या ये सेम रेडिकल्स हैं? नंबर ऑफ रेडिकल्स Yes, आर sir. हियर 3 एंड नंबर ऑफ रेडिकल्स आर हियर 6. अगर ये दोनों 6 plus 3 is 9 under root 2. ठीक है?
ओके सर। क्लियर है सबको यहाँ तक? मतलब सर इस वाली ये 8 वाली प्रॉपर्टी में मतलब अगर ये जो रूट्स सेम होंगे तो हम लोग नंबर्स को ऐड कर देंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल, अगर रूट सेम होंगे तो उनके कोफिशिएंट्स, ये नंबर्स, नंबर बिफोर द रूट्स आर गोइंग टू बी एडेड टुगेदर। सर अगर रूट सेम नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर या तो रूट सेम बनाएंगे या हम उसको जो है डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे या रूट को सॉल्व करेंगे, समथिंग लाइक वुड बी हैपन, राइट? नॉट बिफोर you यस have the same roots. सर 9 अब √2 कैसे आया? हला, अभी हमने सारी चीजें करने के बाद आप ये सवाल करती हैं। 9 अंडर रूट ऐसे आया, ये देखें, 3 + 6। नो सर 9 तो समझ आ फिर क्या हाला? सर बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि √2 कैसे आया? अंडर रूट 2 यहाँ था ना बेटा, क्वेश्चन में था आपके। क्लियर? यस सर। That's clear. Okay, that's great. So that's it for today's class. We'll do exercise tomorrow, inshallah, of these properties, against these properties, right? So hope you understand, and we'll see you tomorrow, inshallah, in the next class. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।